Marhaba. Welcome back To Islamic preacher and apologist. A very big hello and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to you all. Now let's get to it. Today I'm going to be talking about the Camel Hump Hijab. Scholars have actually spoken about it, but what I'm going to tell you is going to be different. I'm going to tell you why is it so bad. ये वीडियो उर्दू में भी है, प्लीज़ आगे जाके चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. I'll tell you about the following hadith. Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "There are two groups from among the dwellers of Jahannam, hell, whom I have not seen. Some people who have whips like tails of cows, i.e. very thick, with which they beat peoples and women, covering their bodies yet naked, who flirt and attract, whose heads are like humps of camels. They will not enter Jannah, paradise, nor will they enjoy its fragrance, even though its fragrance can be smelt from such and such distance." Sahih Muslim. The biggest issue about the Camel Hump Hijab is the hypocrisy behind it. And let me give you an example. If I say to you that I don't flash my wealth, and then I do this. In this video, you can't see the wealth, you can't see the money, you can't see the coins, but you can hear the sound of it, yes or no, so you get an idea that it's still there. Likewise is the Camel Hump Hijab. You may be covering your head, but not your hair, and the purpose behind the hijab was to cover your hair. This is what's underneath the Camel Hump Hijab. It's not usually the hair which is underneath the hijab that's that long. It's actually the hair clip. So basically the woman who actually has the Camel Hump Hijab is actually deceiving you. But not only deceiving the person who's actually watching her, but deceiving the creator too. You're fulfilling Allah's command, but also giving others the idea of it too. So basically deceiving two people, the person watching and Allah. Basically the fact is the answer to why it's so bad didn't come so easily to me until I actually met someone who was something else from the inside and something else from the out. It's factual. The double-faced attribute is not just external, but it will be internal too. If your language is English, this video ends here. Now I will speak in Urdu. Assalamu alaikum नाज़रीन. माना जाता है कि कैमल हम्प हिजाब वाली खातून कभी जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेगी, पर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आज तक किसी भी उलमा ने नहीं बताई होगी, लेकिन इसकी वजह मैं आपको आज बताती हूँ. मिसाल के तौर पे ये वीडियो, इसमें पैसा दिख नहीं रहा, लेकिन इसकी पैसे की खनक ज़रूर पता चल रही है. इस खनक से ही अंदाज़ा हो रहा है कि इस पर्स में पैसे हैं. ठीक इसी तरह कैमल हम्प हिजाब का भी दस्तूर है. कैमल हम्प हिजाब वाली खातून इस आइटम का इस्तेमाल करती हैं. बात यह है कि बात सर ढकने की नहीं है, बात है बाल ढकने की. आप बालों को ढक भी रहे हो, लेकिन इसका अंदाज़ा भी आवाम को दे रहे हो. तो ये कैसा इस्लाम है, ये कैसा दस्तूर है? कैमल हम्प हिजाब के पीछे दोगलापन है और धोखा है. जो लोग दोगले होते हैं और धोखा देना चाहते हैं, वही खातून इस चीज़ का इस्तेमाल करती हैं कि बालों को ढक भी रही हैं और इसका दिखावा भी कर रही हैं. जो अंग्रेज़ औरतें अपने जिस्म का दिखावा करती हैं, मिनी स्कर्ट पहनती हैं, वो जो होंगी वो होंगी. मगर कैमल हम्प हिजाब वाली खातून बाहर से कुछ, अंदर से कुछ, सवाए धोखा और कुछ नहीं. उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी. जज़ाकल्लाह खैर देखने के लिए. If you like this video, don't forget to subscribe. Take care and goodbye.